Good morning guys, my name is Parth and today I'll be teaching you a bit about thermodynamics. So thermodynamics is a branch of science which deals with the interaction of specific material in a well-defined surround system with different forms of energy like heat and work. So इससे पहले मैं हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ें हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स और डेफिनेशंस समझनी पड़ेंगी एज टू वो क्यों बनाई है हमने और उसका मतलब क्या है और ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ और आई विल बी टेलिंग यू अबाउट zeroth and first law of thermodynamics. I will not be telling you about second and third law of thermodynamics which deals with the concept of entropy and with the setting up of reference point for entropy respectively. So I won't be telling you about that वो क्योंकि अगर उतना सब बताने लग गया तो आधा पौना घंटा ये आराम से खींच जाएगा लेक्चर. So I'm not going to be telling you about that. So let's start the lecture. Now first let's talk about system. Now जब भी हम thermodynamics पढ़ते हैं तो हमें एक किसी भी चीज को एनालाइज करना है किसी मैटर को एनालाइज करना है कि जब उस पर हम एनर्जी या वर्क डालेंगे तो क्या इफेक्ट होने वाला है उस चीज पे. सो द थिंग दैट वी वांट टू एनालाइज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज डिफाइंड एज अ सिस्टम. That's obvious. So the system that we want to analyze, apart from that, excluding that, the rest of the universe is known as the surrounding. Now how do we define a system? तो मतलब सिस्टम कहाँ पे खत्म हो रहा है और सराउंडिंग कहाँ पे शुरू हो रही है. नाउ इस चीज को सेटअप करने के लिए वी डिफाइन द बाउंड्री. सो दिस इज द ग्राफिकल, दिस इज अ पिक्टोरियल एनालिसिस बेसिकली. दिस इज द सिस्टम, एनी प्री डिफाइंड सिस्टम दैट आई क्रिएटेड माई सेल्फ. द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज द सराउंडिंग एंड द सर्फेस which isolates the surrounding from the system is known as the boundary. Now it is important to note that boundary has mathematically zero thickness, or boundary can be real or imaginary, it can be stationary or moving. Boundary itself can be moving. So it's a very important concept. ऐसा मत सोचना कि कोई आपको एग्जांपल मिल गया जहाँ पे बाउंड्री मूव हो रही है और you'll be like wow this is completely new. No, it's completely logical. So I'm just preparing you for the aftermath in case it happens. So yeah, so we have set up the basic definitions of system, boundary and surrounding. Now in surrounding there is one assumption. That assumption is the surrounding is an infinite heat sink. Now what do we mean by that? इसका मतलब ये होता है कि आप चाहे जितनी मर्जी हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर करा लें बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. मतलब आप कितनी भी एनर्जी आप उसमें से ले सकते हैं, कितनी भी हीट ट्रांसफर आप सिस्टम को सराउंडिंग से ले सकते हैं या उसको दे सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. आप मतलब सराउंडिंग इज लाइक कुंकर, कितना भी खाना उसको दे दो वो खाता रहेगा और डकार भी नहीं मारेगा, ऐसा सिस्टम है. ठीक है. सो सराउंडिंग इज इक्वल टू कुंकर, दैट्स इट. याद रखिए ये, दैट्स अ वेरी नीट ट्रिक टू रिमेंबर इट. नाउ let's talk a bit more about systems. Now systems are of three types: closed system, isolated system and open system. Now let's talk about closed system. A closed system is a system in which there is heat transfer between the system and the surrounding, but there is no mass transfer. Now ये मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ. Let's consider a piston cylinder arrangement. इसमें we have to analyze the gases, how the gases react जब हम कुछ भी करते हैं उसको. तो मान लीजिए अब हमें गैसेस को एनालाइज करना है तो हमने ये सिस्टम क्रिएट कर लिया. So just the inside of the piston and just inside the walls of the cylinder is our system. Now this is the system. So rest of the whole universe would be the surrounding. So technically I am surrounding for that system with respect to that system. Now जैसे जैसे मैं इस सिस्टम में फोर्स लगाता रहूंगा, the system would be applying force on the piston and the piston would be applying force on the gas. तो the piston would be compressing the gas, जिससे उसकी
internal energy, the gas internal energy would be increasing. So the surrounding is doing some work on the system. Now note that at any point of time, the amount of particles in the gas in the system would always be constant. There is no mass transfer in here. So this is an example of a closed system where there can be energy transfer between surrounding and system, but there can be no mass transfer. Now the second case is open system. Open system is the system जहाँ पे both mass और energy transfer दोनों हो सकते हैं. A simple case of that would be heat exchangers, turbines, pipes or nozzles inside hydraulic circuits. इन सब के analysis के लिए we will always need open systems, क्योंकि इसमें जब fluid flow कर रहा होता है तो जो हम system लेते हैं उसमें fluid अंदर भी जा रहा होता है, at the same time fluid बाहर भी जा रहा होता है, और fluid की खुद की एनर्जी होती है by virtue of kinetic energy. Fluid is flowing, so it has to have some energy. So mass transfer भी हो रहा है and energy transfer भी हो रहा है. So because of that, those are the examples of open systems. Now a system in which there can be no heat transfer or mass transfer is known obviously as an isolated system. A simple case of an isolated system would be an adiabatic system. So that will not go further into the isolated systems. So yeah, these are three types of systems. अब किसी भी सिस्टम को हमें डिफाइन करने के लिए हमें उसकी प्रॉपर्टीज एट दैट पॉइंट पता होनी चाहिए. अब सिस्टम की प्रॉपर्टीज होती क्या है? You know those properties very well. They are pressure, temperature, volume, enthalpy. You might not be aware of what enthalpy is or entropy is or what Gibbs free energy is, but those are later concepts which are also the properties of any given system. So इन सब properties से आप किसी भी system के बारे में पता लगा सकते हैं at any point of time. Now अब हम आपके कोर्स के हिसाब से बस एक ही पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, एंड दोज प्रॉब्लम्स आर क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम. नाउ जब भी हम सिस्टम को कोई भी एनर्जी देते हैं या जो भी मास ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर होता है एनर्जी ये सिस्टम में, तो उसकी एनर्जी चेंज होती है या उसकी स्टेट चेंज होती है, एंड इट कंटिन्यूअसली चेंजेस as long as energy is being supplied to it. So the phenomena of changing of its physical properties, physical as well as chemical properties, is known as a process. Now what do I mean by quasi-static equilibrium? Is a type of process जिसमें every single point in the process would be approximately considered to be at equilibrium. Now quasi-static, जैसे let me give you an example. अगर मैं इस पिस्टन को झट से एकदम नीचे कर दूं इधर, तो not at every point of time इसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी. मतलब बहुत सारे ऐसे, या अगर मैंने इसे ऊपर कर दिया, एक्सपैंड कर दिया अचानक से, तो देयर विल बी सम पॉइंट, जैसे मान लीजिए मैंने इसको इधर ले आया बहुत जल्दी एकदम t इज इक्वल टू 0 पे, इधर है t इज इक्वल टू 1 पे मैंने ऊपर ले गया इस पिस्टन को, तो यहाँ पे कुछ एरिया में वैक्यूम आ जाएगी फॉर अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. सो माय पॉइंट इज, अगर हम एकदम जल्दी सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाएंगे, तो वी कांट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम डिफाइन इट्स प्रॉपर्टीज. बट इन क्वाजी स्टैटिक इक्विलिब्रियम मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां से हल्का सा ऊपर ले जाऊंगा और बहुत धीरे धीरे ले जाऊंगा, फिर थोड़ा और ऊपर ले जाऊंगा, फिर थोड़ा और ऊपर ले जाऊंगा. सो जो काम मैं पहले 1 सेकेंड में भी नहीं कर रहा था, वो काम मैं 20 मिनट या 30 मिनट में करूंगा. दैट इज अ जनरल आइडिया. सो उसकी वजह से क्या होगा, हर पॉइंट
in that process would be considered roughly at equilibrium. और हम हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में अभी के लिए ये वाले प्रोसेसेस करेंगे, ऐसे प्रोसेसेस, these flow processes जिसमें at every point of time every state in the process is at equilibrium. That process is known as a quasi-static equilibrium. And हम हमेशा यही वाले processes पढ़ेंगे. We'll always be discussing quasi-static equilibrium in your course. So now we're done with quasi-static equilibrium. Now let's talk about energy. We haven't actually discussed what energy or what heat or what internal energy for that matter is. So internal energy of any body, any system, any particle is by the virtue of motion of its constituent molecules. What does that mean? कुछ तो बोल दिया मैंने, बोला क्या एक्चुअली? ना अगर आपको पता हो तो याद हो तो जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी फेजेस हैं, all of them are made up of molecules. Now molecules in every particle, in every object, be it in any phase, move. They do not stay stationary. Even in solids, they vibrate about a mean position. In gases, they are free to move in any direction. They even collide. In liquids, that's an intermediate stage. But the particles move. And for motion, you need energy. So the energy which corresponds to the random motion of particles is known as the internal energy of an object or a system. Now, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे, वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज. यू नो व्हाई? बिकॉज द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट टू मूव मोर रैंडमली. जैसे जैसे आप उनको एनर्जी देते रहेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर, वैसे वैसे उनकी रैंडम मोशन भी इंक्रीज होती रहेगी. फॉर एग्जाम्पल इन सॉलिड वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा. इन लिक्विड इंटरमीडिएट रहेगा. गैस में velocity of the motion, random motion of the gas particles would also increase. So my point is, जैसे जैसे temperature increase करेगा, वैसे वैसे उसकी internal energy increase करेगी. So if we can say that internal energy U, internal energy is always denoted by U, is a function of T, being temperature. U would always be a function of T. Okay, so now we've covered internal energy. Now what is heat? Now heat is also a form of energy which corresponds to the temperature gradient. Now you'll say, but that's internal energy. Internal energy is the energy which corresponds to the temperature difference or the temperature gradient. How is it different from heat? Now let me give you an example. मान लीजिए ये सराउंडिंग है, और ये सिस्टम है. सराउंडिंग का टेम्परेचर मान लीजिए TSS, सिस्टम का टेम्परेचर मान लीजिए T नॉट है. और मान लीजिए कि सराउंडिंग की जो टेम्परेचर है इट्स ग्रेटर देन T नॉट, मतलब TS is greater than T naught. So the energy will flow due to the temperature gradient, because there is a temperature gradient, and by the definition जो मैंने आपको अभी बोली, that will be heat energy. So I'm sorry, तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी. बट जो एनर्जी सराउंडिंग में है ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, दैट इज इट्स इंटरनल एनर्जी. तो जब तक वो एनर्जी सराउंडिंग में रहेगी, it will be known as the internal energy of the surrounding. जैसे ही वो एनर्जी सिस्टम में पहुंच जाएगी, it will constitute the internal energy of the system. But at the boundary, at the instant वो एनर्जी बाउंड्री को क्रॉस कर रही होगी, at that instant it would be known as heat energy. So that is the difference between heat energy and internal energy. They are due to the same thing. You can even go further to say that they are literally the same thing. But heat energy is always a boundary phenomena. जैसे ही heat energy ने boundary cross कर ली, it won't be heat energy anymore. It will be the internal energy of the system or the surrounding.
So that is a very important difference between internal energy and heat energy. It is very important that you know that. So now we have discussed all of it, and yeah, I'd like to discuss a bit about specific heat. Now specific heat ज़्यादा कुछ है नहीं, वो बस एक यूनिटरी मेथड है टू फिगर आउट कितनी हीट बॉडी से निकल रही है या बॉडी में जा रही है. एंड स्पेसिफिक हीट इज यूजुअली बेस्ड ऑन यूनिटरी मेथड. Specific heat is defined as, specific heat is denoted by S. It is defined as heat required to increase the temperature of one unit mass of any specific material by 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin. This is मतलब हमने ये डिफाइन कर दिया कि एक यूनिट मास के लिए, एक यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए हमें कितनी हीट चाहिए. तो हम फॉर अ स्पेसिफिक मटेरियल, एक किसी भी एक मटेरियल के लिए, तो अगर उसी मटेरियल का m मास, उसी मटेरियल के m मास को हमें कुछ डेल्टा टी टेम्परेचर से इंक्रीज करना होगा, तो कितना लगेगा. सिंपल यूनिटरी मेथड m into s into delta t हो गई हमारी हीट. सिंपल, इट्स as simple as that. It's nothing more than unitary functions. So unitary method, that's it. So let's talk. और हाँ, हीट का जो यूनिट रहता है, जो यूजुअली हम यूज करते हैं, इट्स कैलोरी. यूजुअली जूल्स भी यूज कर सकते हैं, बट we use usually calorie. So let's talk a bit about history of thermodynamics. अब कैलोरी से ही मुझे ये याद आया, वरना भूल गया था मैं. तो हिस्ट्री, in the ancient times there was a theory known as calorific theory. अब calorific theory में क्या होता था? Calorific theory में साइंटिस्ट ने हाइपोथेसाइज किया था कि there is a invisible mysterious fluid known as a calorie. Surprise. जो जब भी कोई भी बॉडी में हीट आती थी तो उसमें कैलोरी भी आती थी. दैट फ्लूइड, दैट मिस्टीरियस फ्लूइड यूज्ड टू इंड्यूस हीट इन एनी बॉडी. उस कैलोरी, उस मिस्टीरियस फ्लूइड की वजह से उस मिस्टीरियस फ्लूइड कैलोरी की वजह से हीट एनर्जी आती थी या जाती थी बॉडी. सो ये मानना था. और उस टाइम पे साइंटिस्ट को लगता था हीट एंड एनर्जी, दे बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट द सेम. ना उस टाइम पे एक बंदा आया, जूल्स, वो महाशय आया, उन्होंने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड ही फाउंड आउट हीट एंड एनर्जी दे आर बोथ द सेम थिंग. वो बस डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम थिंग है, मतलब दे कैन बी इंटरचेंजेबल. और उसने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उस टाइम पे यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क जूल्स नहीं होता, बिकॉज उस टाइम पे जूल्स बंदा था, उससे पहले जूल्स नहीं आया था. उस टाइम पे यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता था न्यूटन मीटर होता था. सो ही फाउंड आउट दैट 1 कैलोरी was equal to 4.2 times Newton meter. Now this equation is very important and it is known as the mechanical equivalent of heat. Okay? Now इस equation से हमें the scientists got to know that heat and energy aren't different after all. They are the same thing. They can be interconvertible from one to other. So this is extremely important equation. So अगर if you really think about it, जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडक्शन जो भी इंडक्शन राइस कुकर्स वगैरह होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं टू इन ऑर्डर फॉर यू टू कुक योर मील्स, वो इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं.
That's all. Now let's talk a bit about state and path functions. Now in the earlier part of my lecture I talked about u is a function of temperature. Now मान लीजिए ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ये कोई दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज कुछ अलग है। अब मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कोई भी प्रोसेस जा रहा है। अब इट डजंट मैटर किस रास्ते से जा रहा है, कोई भी रास्ता हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। नाउ हमें निकालना है द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। नाउ इंटरनल एनर्जी एट ए कितना होगा, यू ए। नाउ डेल्टा यू जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू यू बी माइनस यू ए, फाइनल माइनस इनिशियल। नाउ यू बी होगी f as a function of Tg minus f as a function of Ta. This will be equal to delta U. Fairly simple. Now notice, अब हमें फर्क नहीं पड़ता है कि किस रास्ते से, किस पाथ को चूज किया है, कौन से प्रोसेस को चूज किया है टू गेट फ्रॉम A to B. As long as the system is going from point A to point B, the internal energy's change would be this. So, state functions are those functions जिनको path से फर्क नहीं पड़ता, whose properties are independent of the path taken. Now, and path functions are obviously those types of functions whose properties depend on the path that is taken from going from one position to point B. Now, let's take an example of a path function. Now, I am assuming that you know this formula. Work is equal to integral of P dot dV. This is actually a very general formula. बहुत पहले से आया हुआ है। F dot dx का इंटीग्रल होता है, उस पर फिर F को we can write P into A dx और this is nothing more than dV, so it comes here. Yeah. So this integral means कि अगर हम t versus v का ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ का जो एरिया होगा अंडर द v कर्व, अंडर द v लाइन, this area from A point to B point, this area would define the work done from going from A point to B point. It's simple. Now, अगर हम इसमें path change कर दें, ये path लें, then we can see that the work will change. Now, in this case, the work done would be a function of the path taken. It matters which path is taken to reach from point A to point B, and hence this work would be a function, would be a path function. So this is a very obvious, very simple definition and the terms that we use in thermodynamics. Now let's very quickly go to the first law, the zeroth law of thermodynamics. कुछ भी नहीं है, दो बॉडी की चीज है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर एक तीन बॉडी है A, B, C, ए मान लीजिए ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ इन दोनों के टेम्परेचर्स इक्वल है। अगर इन दोनों को आप एकदम चिपटा के रख दोगे, देयर विल बी नो हीट ट्रांसफर बिटवीन देम, दे विल बी इन इक्विलिब्रियम, देयर टेम्परेचर्स आर कांस्टेंट। सो अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो सरप्राइज सरप्राइज क्या मतलब क्या हुआ है? दिस लॉ स्टेट्स दैट A would also be in thermal equilibrium with B. अंधे को भी दिख रहा है ये होगा, मतलब ऑब्वियस ही बात है। इसमें कुछ भी इतना सोचने वाली बात नहीं है। दिस इज सिंपली
an associative property in physics, ऐसा समझ लो। वो होता था ना, A is equal to B is equal to C, A is equal to B and B is equal to C, so A would be equal to C। तो ये वही है और कुछ नहीं है, इन्होंने associativity property thermodynamics में चेप दी और कुछ भी नहीं, simple। This is the first law, zeroth law of thermodynamics। Now, the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is the most misinterpreted law of thermodynamics, misinterpreted law ever. Now, let me show you. This is not the first law of thermodynamics. I repeat, this is not the first law of thermodynamics. ये गलत है। First law of thermodynamics states that the heat energy or any form of energy can neither be created nor be destroyed. Basically, it's law of conservation of energy. First law of thermodynamics is equivalent to law of conservation of energy. It states that, मान लीजिए, for example, ये एक गाड़ी है। सॉरी, मेरी ड्राइंग खराब है तो सोचना मत, बस मान लो हमने इसमें फ्यूल डाला, फ्यूल की वजह से इसमें हीट आई, हीट मान लीजिए इसमें हमने Q in दिया, उसकी वजह से ये मूव हो रहा है एंड दिस इज आवर सिस्टम। मान लीजिए तो Q in इज इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये एग्जॉस्ट से थोड़ा धुआं भी निकाल रहा होगा और धुएं में थोड़ी हीट भी निकलेगी, तो जो एग्जॉस्ट पाइप से जितनी हीट निकल रही है प्लस Q आउट। और मान लीजिए इसकी ये कहीं पे ऊपर पहाड़ी पे चढ़ रहा है तो इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, तो प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी खुद की भी कुछ इंटरनल एनर्जी होगी। सारी की सारी जितना भी आप इसमें हीट डाल रहे होंगे सारा का सारा इस गाड़ी को मूव फॉरवर्ड करने में नहीं लगेगा, कुछ हीट कुछ जो एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी में डिसिपेट होके इस गाड़ी को वार्म करेगी, सो इट विल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। सो दिस is the first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics clearly states that the energy can neither be created nor be destroyed. It has to be conserved. Now, most of the cases of thermodynamics, almost हर केस में kinetic energy of the system would be zero और potential energy would be zero, और जो Q out होगा, Q out को आप इस साइड ले सकते हैं, and yes, this car would also be doing some work, obviously, तो plus work done by the car, तो Q out को आप इधर ले सकते हैं, तो Q in net is equal to delta U plus WD, work done। ये दो तो सेम। So this equation is only a specific type of equation जो आती है when we conserve energy, when we apply the first law of thermodynamics. This is not the first law of thermodynamics. This is the equation that we get in a very specific example